कान से बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले से बेहतर है, आप प्लीज। ठीक है सर, हाँ मैंने वो गेट वगैरह बंद कर दिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस मॉडलिटीज, दिस मॉड्यूल 4 of your paper 1, and this module 4 we have modalities of counseling and family therapy. And in counseling and family therapy we have modalities: number 1 family interview, number 2 crisis intervention, number 3 supportive counseling, number 4 psychoeducation, and this next is social skill therapy. So basically family interview, I'm not going in detail. You know, interview, it is a one-to-one interaction. And family interview, whenever there is any problem in family, the therapist is to take the interview session. And in the interview session, it can be individual interview or it can be a group interview. The complete family is to be sit together face to face. It is a face to face, one by one, or in person. We are to take interview. I'm not going, because everybody knows about the interview, but this is a lengthy, detailed topic. So basically, I would like to focus on the crisis intervention. Crisis intervention is a topic in your modalities, and crisis intervention, everybody knows about the crisis. You take the example of a corona crisis right now going on. Corona crisis or a family crisis. For example, husband and wife have a dispute, they are fighting, children are fighting, they don't obey their parents, no controlling, and any crisis is there. Economical crisis, social crisis, in adjustmental crisis, any type of crisis can be there, right? So how we go for the crisis intervention? And this is a types of modalities of counseling and family therapy. A stressful event or situation had the potential for precipitating a crisis. A stressful event, he is having a potentiality to generate or to create a crisis within the family, within the society, within the situation. So that means the stressful event is more important for the crisis generation, crisis creation. The event or situation that comes at the end of the series of stresses may be minor, making the situation more than the individual can handle. So this depends whether the stressful situation is a minor or stressful situation is a major one. This depends on the individual to handle the situation. If the individual is incapable to handle the situation, so obviously there is a problem. The crisis can be at the high level. If the individual is enough competent to handle the situations, the major crisis can be feel at the lower level. So this depends on the individual capacity, how to deal with the crisis that is within the society, within the family, or intra crisis, whatever will be there. So automatically, individual capacity is one of the most important component to face, to handle, to settle down, to adjust, to adapt with the crisis situation. A crisis differs from stress in that a crisis results in a period of severe disorganizations. Severe disorganizations, right? Something is disorganized, only then a crisis will be there. For example, we have no treatment of corona. We are disorganized automatically, right? So that definitely we are facing a crisis. If we have an organized way of treatment, so we don't have any crisis of treatment of corona, because we are disorganized in the terms of the availability of the vaccine of the corona. So people are facing a problem. So disorganized, severe disorganized manner of situations or the crisis triggers can generate crisis there, and the lack of usual resources or both means disorganized or the lack of usual resources. हमारे पास usual resources की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे पास दवाइयों की कमी है, हमारे पास टेस्टिंग कोरोना टेस्टिंग किट की कमी है. सो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कम है, तो ऑटोमेटिकली क्राइसिस हमें फेस करना पड़ेगा. सो according to the Taylor, Taylor 1982, what is the crisis? He described the crisis. The crisis is a state of disequilibrium, that is disorganized. Disequilibrium resulting from the interaction of an event with the individuals or families' coping mechanisms. Disequilibrium within the individual or the family mechanisms of coping, which are inadequate. कॉपिंग मैकेनिज्म्स है फैमिली के अंदर, इंडिविजुअल में कॉपिंग मैकेनिज्म्स है,
but that coping mechanism is inadequate to meet the demand of the situations to combine with the individual or the family. Coping mechanism is not adequate. That is one inadequate at the individual level or at the family level. This is the reason that crisis we are facing, right? So this equilibrium resulting from the interaction of an event with the individual or the family. कोई इवेंट होगा उसमें अगर हमारे पास डिस इक्विलिब्रियम होगा और उसको हम प्रॉपरली फेस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली तो उसको हम क्राइसिस फील करेंगे. What is the definition of crisis? Crisis, a dramatic, emotional, or circumstantial uphill in a personal life and a stage in a sequence of events at which the trend of all future events, especially for better, are determined to turning point. This is a dramatic, emotional, or circumstantial situations at the personal life or a stage of sequence in our personal life. Automatically, if it is in family crisis, if it is in individual crisis, so automatically personal life of the individual or the family is to be disturbed there. So what are the types of the crisis? There are three types of the crisis. Number one, maturational or developmental crisis. Maturational or developmental crisis, you take the example of economical crisis, you take the example of social crisis, right? Developmental crisis, there is a gap between rich and poor. This is the developmental crisis, right? So when the rich, high the gap, high the crisis, lower the gap between rich and poor, minimum the crisis. Crisis, the gap between the literate and the illiterate person, the gap between gender, men and female, male and female, there is a gap. Higher the gap, more the crisis. Lower the gap, minimum the crisis. So the crisis, there are three types. Number one, maturational and the development. Number two, situational. Situational crisis. This corona is a situational crisis, right? And then advantageous crisis. That the social adversities, social adversities, like you take, or the climatic adversities you can take. That is tsunami, for example. So these are three types of the crisis to we are to face. If whatever one or two or three crises at the time, we have to face accordingly. So what crisis counseling is? According to the American Counseling Association, counseling assists individual with coping and support after a major crisis. So this is the meaning of counseling given by American Counseling Association, that crisis counseling assists the individual with coping and support after a major crisis problem. That automatically the counseling assists the individual with coping and support after the crisis. During तो करते ही करते हैं. During the crisis, there are a lot of people to come forward for the help. You take the example of, for example, tsunami is there, earthquake is there. Immediate there are, or the train accident is there, for example. Train accident, a lot of people reach there to rescue the train accident, right? So immediate support will be available, government will be there, police will be there, military will be there. But after the crisis, no military will come to you, no government will come to you, no people will come to your house. You have to handle the crisis at your own level. So that means after the crisis, the support is more important than the during the crisis. During the crisis, lot of support free मिल जाता आप लोगों सबको. हम सबको जब कोई क्राइसिस होता है, नेचुरल क्लैमिटी होता है, गवर्नमेंट अपने आप सपोर्ट कर देता है, राइट? मिलिट्री, पुलिस, डॉक्टर सब फ्री मिलते हैं, राइट? बट जब आफ्टर द क्राइसिस हमने रिहेबिलिटेट होना है, ना गवर्नमेंट पूछती है, ना मेडिकल वाले पूछते हैं, हमने अपने लेवल पे ही रिहेबिलिटेट होना है. So that time we need the assistance, and that support, that assistance can be given by your counselor. Crisis counseling is brief and time limited with specific goal for achieving stability. Crisis counseling is a brief and automatically specific with specific goal. It is brief and time limited. Crisis can never be for lifelong, right? It is a time period. There is a one periodicity is there, time specific is there. 1 week, 2 week, 1 month, 3 month, for example, the crisis situation will be there. After that, everything is to be normalized.
So that means the crisis is counseling is a brief, time limited with a specific goal. सुनामी अर्थक्वेक स्पेसिफिक गोल है, अर्थक्वेक में लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, कोरोना में लोगों को मास्क की अवेयरनेस करवानी है, कोरोना में लोगों को हैंड वॉश करवाना है. इट्स नॉट, इट इज अ टाइम लिमिटेड ब्रीफ है हमारा, ये 1 साल रहेगा, 6 महीने रहेगा कोरोना, देन वैक्सीन विल बी देयर ऑटोमेटिकली, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, राइट. सो दिस इज क्राइसिस काउंसलिंग इज ए ब्रीफ एंड टाइम लिमिटेड विद स्पेसिफिक गोल. हाथ धोना, मास्क लगाना हमारा एक स्पेसिफिक गोल है कि हम कोरोना से बचना है, फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी, फॉर अचीविंग स्टेबल लाइफ, गुड लाइफ. Therefore, this type of counseling can range from 15 minutes to 2 hours. Is provided through 1 या 3 सेशन होते हैं, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 भी ले लेते हैं हम. मिनिमम 15 मिनट से 2 घंटे तक हम इस सेशंस को टेकअप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर एंड द डिग्री ऑफ क्राइसिस एंड द टाइम ऑफ क्राइसिस, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, राइट. Place of crisis. Accordingly, we can fix up your situations of crisis. And there can be session, one more, 1, 2, 3, 4 sessions can be there, of each 15 to 2 hours, minute, or 2 hours. So while it is not a substitute for long-term therapy or psychiatric care, this is not the substitute of long psychotherapy. Psychotherapy can go for 6 months, right? Psychiatric care go for 1 year, for example. It's not so long. It is a time limited. It is a brief. So if somebody asks you what the difference between the psychotherapy, psychiatric care, or crisis counseling, so it is the difference. Crisis counseling is a brief and time limited with a specific goal. No doubt, every therapy, every psychiatric care is having a specific goal, but they are not brief. They are not time limited. So crisis counseling is not a substitute of long-term therapy or psychiatric care. Crisis counseling can provide a safe outlet for immediate relief. हम क्राइसिस काउंसलिंग इसलिए देते हैं कि इमीडिएट रिलीफ देना हमने क्लाइंट, इमीडिएट रिलीफ. और थेरेपी, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी और या फिर साइकेट्रिक केयर में इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता. दैट इमीडिएट रिलीफ के बजाय एक प्रोसेस के थ्रू रिलीफ मिलता है. इज ए प्रोसेस ऑफ थेरेपी, राइट. सो क्राइसिस काउंसलिंग इज providing a safe outlet for immediate relief. Another difference between psychotherapy or psychiatric care and crisis counseling is crisis counseling we use for immediate relief, and psychiatric care or psychotherapy or counseling therapy we go for a relief through a process. So crisis counselors often utilize psychological first aid. साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, दैट इज इमीडिएट रिलीफ देना है ना हमने. इमीडिएट रिलीफ में तो फर्स्ट एड ही दे पाएंगे ना हम लोग, राइट. एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड दे के फिर उसको आगे फटाफट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, हॉस्पिटल में, राइट. सो सिमिलरली क्राइसिस काउंसलर्स विल यूज psychological first aid which focus on reducing acute distress, restoring physical mental stabilization. एक्सीडेंट हो गया, all people were become nervous, डिस्टेबलाइज एकदम से, उनको इमीडिएटली फर्स्ट एड दिया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल लेवल पे आ सके और सोच सके उसके बाद हमने क्या करना, राइट. सो दैट इज क्राइसिस काउंसलिंग फोकस ऑन रिड्यूसिंग एक्यूट डिस्ट्रेस, restoring physical and mental stabilization, and integrate pro-social coping skills. So crisis counseling help you to be a pro-social. Professional trained mental health first aid. Professional trained mental health first aid assist with identifying and responding to the sign of mental illness or substance use. Professional trained mental health first aid can help you to identify the problem where the crisis intervention is needed there.
क्राइसिस इंटरवेंशन और क्राइसिस काउंसलिंग इज ऑलमोस्ट बराबर है. क्राइसिस काउंसलिंग हेल्प provide relief for those suffering from financial burden, health consequences, severe emotional distress, or grief as a result of these weather disasters. So the crisis counseling can be given in case of financial burdens, health consequences, severe emotional distress, grief, or with the help of, we can extend for weather disasters. सुनामी आ जाना, तूफान आ जाना, बारिश पहुंच जाना, ओले पड़ जाना, राइट, आंधी आके फसल खराब कर देना है, तो दिस इज कॉल्ड weather disasters. We can provide crisis counseling in these areas. Crisis intervention. Crisis intervention refer to the method used to offer immediate short-term help to individual who experience an event that produces emotional, mental, physical, behavioral distress or problem. कोई भी सिचुएशन जिसने हमारे लिए इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उस सिचुएशन के लिए हम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म हेल्प प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को स्टेबलाइज होने के लिए. दैट इज कॉल्ड क्राइसिस इंटरवेंशन. इमीडिएट हेल्प, राइट? समथिंग हैपन विद द क्लाइंट, so the client is affected emotionally, physically and behaviorally all. So immediate help we are to extend to stabilize the client at all these three levels. This is called crisis intervention. A crisis can refer to any situation in which individual perceives a sudden loss of his ability to solve the problem or coping skill. Crisis can refer to any situation. Why we face the crisis? That means when we people unable to face the situation, right? And when we are unable to face the situation, individual perceive a sudden loss. Automatically हम अपने आप को लॉस फील करते हैं in terms of ability, कि मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है मैं सिचुएशन को फेस करने के लिए, right? So we lose our coping skills. So only then crisis situation will be there. Crisis is to be take place. The onset of crisis is only possible when I am failure to face the situation. Until I am successful to face the situation, crisis will not be happen there, right? So what are the objective of the crisis intervention, crisis counseling? Number one, differentiate between psychotherapy and crisis counseling. This is objective. हमने बोलना पड़ेगा वहां पे, हम साइकोथेरेपी नहीं दे रहे, हमने क्राइसिस काउंसलिंग देनी है. जैसे हम आपको बोलते हैं ये काउंसलिंग है, आपका टीचिंग नहीं है. टीचिंग और काउंसलिंग में फर्क है ना. दिस इज नॉट ए रेगुलर टीचिंग, दिस इज ए काउंसलिंग ओनली. काउंसलिंग में होता है कि आपकी प्रॉब्लम होती तो आप जाएंगे और काउंसलिंग करेंगे आप लोगों को एक्सपर्ट और आप वापस आ जाएंगे. यहाँ तो हमारा टीचिंग चल रहा है, काउंसलिंग नहीं चल रहा है. इसीलिए साइकोथेरेपी और क्राइसिस काउंसलिंग में क्लाइंट को पहले डिफरेंशिएट करके बताना पड़ेगा आपको. पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होगा कि यू आर देयर फॉर ए शॉर्ट टर्म फॉर इमीडिएट रिलीफ टू स्टेबलाइज द क्लाइंट so that you can provide him a first aid, mental health first aid immediately. Second is to identify the types of crisis and how to assess client situation. So second, we have to identify the crisis situations, the level of crisis situations. नॉर्मल है या सब नॉर्मल है, सीवियर है या क्रॉनिक है, क्या है? हमने पहले क्राइसिस सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको क्लाइंट जो सिचुएशन में है उसमें उस क्लाइंट को भी स्टडी करना. हमने एक सिचुएशन में 10 क्लाइंट हैं, 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग मेंटली अपसेट नहीं होते. सब बॉडी में हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, वो छोटे बड़े से बड़े भी क्राइसिस में अपसेट नहीं होंगे. एक आदमी जिसका कोर्टिसोल लेवल बिल्कुल पुअर है, कोर्टिसोल इज ए नेम ऑफ हार्मोन, राइट? सो कोर्टिसोल लेवल इज वेरी पुअर, वो छोटी से छोटी भी क्राइसिस में अपने आप को मेंटली इम्बैलेंस कर देगी, राइट? सो हमने आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ क्राइसिस क्या है एंड हाउ टू असेस द क्लाइंट सिचुएशन.
उस क्राइसिस सिचुएशन में क्लाइंट की क्या सिचुएशन है वो भी असेस करनी है आप लोगों को. दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्टिव. देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द मेन एलिमेंट, टू अंडरस्टैंड द मेन एलिमेंट ऑफ द क्राइसिस काउंसलिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन कंपोनेंट ऑफ द क्राइसिस काउंसलिंग. ये नहीं आप उसको साइकोथेरेपी देने बैठ जाएंगे. आप क्राइसिस काउंसलिंग है, उसके मेन एलिमेंट आपने समझना है कि किस आदमी को इमीडिएटली फर्स्ट एड की जरूरत है. मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बोलते हैं इसको. वो नीड द इमीडिएट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. यू हैव टू अंडरस्टैंड, and this is the main element, that is the main criteria to extend the crisis counseling is to identify the person who immediately needs some psychological aids or psychological help, psychological first aid. Now crisis जब काउंसलिंग हम एक्सटेंड करते हैं, साइकोलॉजी वहां सपोर्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और असिस्टेंस देते हैं. 5 assistance you are providing for, support करना, advice करना, and guide that some advice must know the help, support, advice, guidance. If not, you ask a question after my lecture, differentiate all 5 very comfortably, or till then you note down the difference between these 5, how they are different. Right? So the background of the crisis counseling, the root of the modern day crisis counseling date back to World War I and World War II. World War I और World War में जब क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे क्राइसिस काउंसलिंग का कंसेप्ट जनरेट हुए, उससे पहले जनरेट हुए, बट वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में इसको एक्सपीरियंस किया गया. राइट? बिफोर दिस टाइम सोल्जर्स हु एग्जिबिटेड सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल रिएक्शंस टू द वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में सोल्जर्स थे, दे वर हाईली पैनिक. व्हाई दे वर हाईली पैनिक? व्हाई दे वर हाईली स्ट्रेसफुल? दे वर फियरफुल, कि वो डरे हुए थे जो कोई भी फ्रंट लाइन पे जाएगा वो मारा जाएगा, जिंदा वापस नहीं आएगा. Right. So this was the biggest problem among the soldiers to face this crisis, that whosoever on the front line is to be killed there. So this is the crisis there in World War I and World War II. And how it soon became visible that soldiers who immediately offered treatment there. और जब उन लोगों को इमीडिएटली वहां पे क्राइसिस इंटरवेंशन दिया गया तो डिफरेंस पाया गया. लोगों को क्राइसिस इंटरवेंशन देकर के मोटिवेट किया गया कि दिस इज नॉट द यू आर द सोल्जर्स एंड यू आर टू लीव लाइफ फॉर कंट्री. So then crisis counseling is not a psychotherapy. I told you already. Crisis intervention focus on minimizing the stress or event, providing emotional support. Life psychotherapy, crisis counseling involves assessment, planning, and treatment. You have to assess the crisis, and then you go for the intervention during the crisis. Assessment, your planning, and your treatment. So crisis, it's not just a traumatic event or experience, but to an individual's response to a situation. क्राइसिस को ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं है, ये हमारा सिचुएशन है. एक आदमी कुत्ते को देख कर डरता है, एक आदमी कुत्ते को देख कर नहीं डरता है. सिचुएशन दोनों को होनी चाहिए ना, नहीं हुआ, एक आदमी डरा है तो पर्टिकुलरली हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन है. वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन. दो आदमी सेम सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक आदमी डर गया, एक आदमी नहीं डरा है. तो दैट डज नॉट मीन दैट क्राइसिस ए ट्रॉमेटिक इवेंट. क्राइसिस ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं है. हम डरे हुए हैं. कोरोना इज ए क्राइसिस इवेंट? नो. अगर हमारा मेंटली लेवल पे हम पूरे स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग, क्राइसिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. राइट? हम अपने आप मेंटली अपने आप को लूज कर चुके हैं, तो क्राइसिस आएगा तो वैसे ही अपने आप को 50% पहले मर चुके डरते डरते डरते. राइट? क्राइसिस अटैक करेगा 50% वैसे मर जाएंगे. So crisis is not a traumatic event, but
the individual response to the situation is a crisis. So then crisis counseling is to help the individual to restore some sense of control and mastery after a crisis event or disaster. We have to create the individual to control and to be mastery on the situation, right? Basically, you people standing on the red light. रेड लाइट पे कोई आदमी बहुत स्ट्रेसफुल है, कोई आराम से खड़ा है, जो आदमी लेट हो रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल मिलेगा। सिचुएशन सबके लिए बराबर है, राइट? तो ये क्राइसिस के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता, हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है। तो हमने एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देनी है, इमीडिएट रिलीफ देना है टू रिस्टोर सम सेंस ऑफ कंट्रोल एंड मास्टरी। उसके अंदर कंट्रोल तो है पर वो कंट्रोल की कैपेसिटी गुम कर चुका है, बीइंग मेंटली वीक। So then crisis counseling is generally lasting for a period for longer than 5 weeks, although the effects may become long lasting. It can, I told you, it can be 1 session, it can be 2 sessions, it can be 3 sessions, it can be regular, it can be alternate days, it can be after 3 days, it can be after a week. This depends on your setting. So, side of crisis counseling. Number 1, cognitive response. Cognitive response means how cognitive we are affected with the crisis. This is cognitive response. Physical response, how physically we are affected with the crisis. Emotional response, how emotionally we are affected with the crisis. And behavioral response, how our behavior is reacting or affected with the crisis. So these are the 5 levels of signs of your crisis intervention. We can check the sign of crisis counseling at the level of cognitive level, physical level, emotional level, and behavioral level. क्राइसिस काउंसलिंग एंड क्राइसिस इंटरवेंशन दोनों में क्या फर्क है? क्राइसिस काउंसलिंग ए प्रोसेस दैट हैज इट्स फोकस द इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीरीज, राइट? एंड क्राइसिस इंटरवेंशन इज एन इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर, राइट? ड्यूरेशन मैंने पहले बता दिया 50 to 2 hours. It can be for 1 week, it can be for 1 day, it can be for 3 days, it can be for 2 weeks. This depends. Why we do crisis counseling? Because to ensure safety and promote overall stability of the individual affected by the crisis. पहला aim है हमारा to support the individual to be safe and stable. Second, provide emotional support for the individual who are affected with the crisis counseling, crisis situation. We have to emotionally support the client. Next, to solve the problem and assist the individual in obtaining available resources. Whatever the resources are available, we have to help the client to choose the available resources out of the situation. The next, to store equilibrium. इक्विलिब्रियम हमारा जो इक्विलाइजेशन होता है, माइंड और बॉडी का इक्विलाइजेशन होता है, इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो इक्विलाइजेशन होता है, वो हम गुम कर चुके होते हैं क्राइसिस के अंदर। वी लॉस्ट our individual capacity, we lost our social capacity, we lost our family capacity. So equilibrium हमारा restore करने के लिए हम crisis intervention हम देते हैं. Then what is the counselor role of crisis intervention? Number 1, listen to the concern. Whoever is affected with the crisis situation, we have to listen him or her case. The first role. The second role is that assess safety needs. Crisis आ रहा है, crisis happen. We have to find out the safety needs immediately. What are the safety clues? Safety needs are available. We have to focus on the available safety needs, right? Suppose किसी ने किसी को सांप को काटा, सांप snake bite हो गया. This is a crisis. Immediately you cannot rush to the doctor. Immediately you cannot go. लोग क्या कहते हैं, जहां से snake को काटते हैं थोड़ा सा ऊपर उसको बहुत टाइटली उस पार्ट को बांध देते हैं कि उसका snake का जो poison है पूरी बॉडी में ना जाए। This is immediate safety. We have to take care. So immediately you cannot provide all the medical facilities, but whatever the instant support is available, you have to find out the safety needs immediately available. The next role of the counselor is protect rights and responsibility of the clients. Rights and responsibility of the client. Crisis. आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, हिसार में किसी बीजेपी के नेता ने किसी एक लड़की को गलत कमेंट कर दी। उस लड़की ने सडन निकाल के उसको नेताजी को पीट दिया। अखबार में आज न्यूज आई हुई, राइट? सो बेसिकली दैट वाज ए क्राइसिस फॉर द नेताजी एंड द गर्ल बोथ, राइट? सो ड्यूरिंग दैट क्राइसिस ऑटोमेटिकली वी नीड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट, हु इज द राइट? लड़की का राइट है टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसने उसको कोई गलत लैंग्वेज नहीं बोलना। देन वहां पे जो बाई स्टैंडर्ड लोग हैं, जो खड़े लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रेस्क्यू द गर्ल, टू इमीडिएटली इंटरवीन देयर। दिस इज ए क्राइसिस हैपन देयर विद इन द सिचुएशंस वी आर टू explore the rights and responsibilities available there immediately affected by the crisis there immediately. So the next one is putting objectives. So what are the objectives of the crisis, the situations there? Crisis counseling, we have an objective to restore smooth functioning, stabilization of the mental, physical, and the cognitive level of the individual. Then speak clearly. आपने बहुत क्लियरली बोलना है, क्योंकि आदमी उस टाइम इमोशनल डिस्टर्ब होता है क्राइसिस में। आप जब तक बहुत क्लियरली नहीं बोलेंगे, उसको आदत समझ में नहीं आएगा, आदत आपको सुनेगा ही नहीं, राइट? सो देन नेक्स्ट, टेक इमीडिएट डायरेक्ट एक्शन, रिस्टोर मोबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम. So what are the elements of the crisis counseling? First part of crisis counseling involves assessing the client's current situation. पहला एलिमेंट है, हमने जो हमारी करंट सिचुएशन है उसको इमीडिएटली असेस करना है, हमने इमीडिएटली. सेकंड, लिसनिंग टू द क्लाइंट, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डिटरमाइनिंग व्हाट द इंडिविजुअल नीड्स टू कॉप इफेक्टिव विद द क्राइसिस. हमने क्लाइंट को सुनना है और सुनने के बाद उससे क्वेश्चन पूछना है कि तू क्या चाहता है, हाउ यू वांट टू कम आउट फ्रॉम द क्राइसिस, व्हाट आर द what things in your mind, what is going on in your mind. So next element is, during the time the crisis counseling, the client needs empathy, acceptance and support. उसको एक्सेप्ट करना हमने इमीडिएटली, एम्पैथेटिक एटीट्यूड दिखाना है और उसको सपोर्ट देनी है हमने. एंश्योर क्लाइंट सेफ्टी both physically and psychological. This is also another your element of crisis counseling. So then education, we have to minimize the damage, we have to educate the public to minimize the damage. This is next element of crisis counseling, to educate the people to minimize the damage. You take the example of recently जो उड़ीसा में तूफान आया था, लोगों को एजुकेट किया गवर्नमेंट ने पहले कि आप जगह खाली कर दो, यहाँ पे ये इफेक्ट होगा. लोग, the government has shifted the people from one place to another place. They educated, otherwise people become annoyed कि हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएं, right? Now educate कर रहे लोगों को, मास्क पहनो, हाथ बार बार धो, social distancing करो. We are educating the people because we are minimizing the damage in corona. So then support, stabilizing, active listening, and then non-judgmental होना है हमने. We should not be the judgmental one in crisis situation. As a counselor, you must be non-judgmental. आपने कोई जजमेंट नहीं देनी है कि तेरे को शर्म नहीं आती, अपने आप हेल्प नहीं कर सकते क्राइसिस में, तो क्या हुआ, तू जवान है, हट्टा कट्टा है, क्या हो गया? We cannot give any judgment, right? So we should be the non-judgmental and develop a brief dependency and supportive people, right? सपोर्टिव पीपल, आपने एक ग्रुप जनरेट करना वहां पे जो क्राइसिस सिचुएशन में जो सपोर्ट करेंगे लोगों को, एंड स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंडिपेंडेंट होना चाहिए. देन हेल्पिंग क्राइसिस डेवलप कॉपिंग स्किल, उनको कॉपिंग स्किल मैकेनिज्म सिखाना लोगों ने. एक्सप्लोर डिफरेंट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, भिन्न अलग अलग तरह के सॉल्यूशन बताना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो भी उसकी एक्सेसिबिलिटी में आएगा क्लाइंट के क्राइसिस में से, उसको आप कर लेगा. एंड देन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक आपने सिखानी पड़ेगी, राइट? एनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग अमंग द क्लाइंट, राइट? पॉजिटिव थिंकिंग आपको जनरेट करना है, एनकरेज करना है, राइट? व्हाट आर द गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन? द गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन टू डिक्रीज इमोशनल स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट द क्राइसिस विक्टिम फ्रॉम एडिशनल स्ट्रेस. हमने स्ट्रेस कंट्रोल करना है, इमोशनल स्ट्रेस कंट्रोल करना है, कोई एडिशनल स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होना चाहिए उसको. We are controlling the emotional stress and simultaneously we are also managing for the additional stress. This is the first goal. Second goal, to assist the victim in organizing and mobilizing resources for support system. हमने क्राइसिस विक्टिम को सपोर्ट करना है, मोबिलाइज और ऑर्गेनाइज करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल उनको. Techniques of crisis intervention. What are the techniques you people use as a counselor in crisis intervention? Number one technique is catharsis. Catharsis means
to release the feelings that take place and the patients talk about emotional charges areas. Of emotional ventilation is called your catharsis, right? Catharsis, क्राइसिस सिचुएशन में जो आदमी इमोशनली वेंटिलेट कर दे, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही हमें, हम इतने परेशानी में, यू टेक द एग्जांपल ऑफ लेबर क्लास इन कोरोना, लेबर क्लास, lot of problem, lot of statements are giving anti government because automatically they are thinking ki the people are getting a catharsis by ventilating their emotions. They are giving negative statement, that means they are getting catharsis. उनको बोलने तो जो बोलना है, अब उनको रोकेंगे नहीं, right? Because the people are under stress, people are under emotional psychological stress. The next is clarification. Second technique is clarification, encouraging the patient to express more clearly the relationship between certain events. जो जो हो रहा है, हो चुका है, हमने क्लैरिफिकेशन लेना क्लाइंट से कि more clearly he or she explain so that support can be extended very fast in a good quality with the clarification. You take the example of this कौन सी कॉलोनी जिसमें कोरोना चंडीगढ़ में ज्यादा हुआ, आई फॉरगेट द नेम, राइट? वहां पे पहले हमने क्लैरिफिकेशन है लोगों से कि यहाँ पे क्यों ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दिस पॉकेट इज ओनली वन पॉकेट वेयर इट कैन बी द रेड जोन, and then we give the people clarification, don't hire any manpower from this particular area, Bapu Dham colony, right? Yes, don't hire any manpower, don't hire any labor class from this particular. We are giving the clarification why don't hire, we have to give the clarifications because crisis आगे ना बढ़ जाएगी. Then suggestions. Next is a suggestions, influencing a person to accept an idea for or belief, particularly the belief that nurse can help and the person will in tune feel better. हमने उनको suggestions देने भी और suggestions लेने भी, right? They will suggest what are the coping skills available with them, what are resources available them, they are to suggest, and then we have to suggest which one will be best one to opt. Then reinforcement of the behavior, giving the potential positive reinforcement to adaptive behavior, राइट? जो भी कोरोना से जीत के निकल के आ रहा है, कोरोना से ठीक होके आ रहा है, हॉस्पिटल में या कहीं में भी डॉक्टर जब उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसको बैलून देते हैं, उसको फ्लावर देते हैं, उसको सेंड ऑफ करते हैं, पर्टिकुलरली एक फॉर्मल फंक्शन करते हैं, उसको रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं ताकि लोग मोटिवेट हो कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये जिंदा आ जाए तो हम भी जिंदा आ जाएंगे, राइट? रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं अबाउट हिज मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, कि वो आदमी मेंटल और फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोरोना को हरा के आ गया. This is called reinforcement of the behavior. Then support of defenses. जो defenses available है, जो support available, right? और जो resources available, उसके through हमने support करना है. कोई नया resources generate नहीं करना, help करने का बात. Within because it's short one ना, available जो भी है आपका existing जो भी उसमें हमने generate करना है to provide the first aid. The real self-esteem. लोग हिम्मत हार चुके होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब सब कुछ गुम हो गया, हम बर्बाद हो गए. बट पीपल लूज देयर एस्टीम, पीपल लूज देयर एस्टीमेट अबाउट सेल्फ. यू हैव टू रीबिल्ड देयर एस्टीमेट अबाउट सेल्फ, ओनली देन दे कैन सर्वाइव देयर डिजीज. देन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एग्जामिनिंग द अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग द इमीडिएट प्रॉब्लम. अल्टरनेट वे सोचने हमने, उनको सजेस्ट करने, राइट? Only then we can, exploring the alternate solutions, we can come over the problem. Phases of crisis intervention. किस phases में हमने intervene करना वहां पे? Crisis में number 1 immediate crisis. Immediate crisis है, अभी का अभी है, नहीं तो आदमी मर जाएगा. किसी को हार्ट अटैक हो गया, immediately he need the first aid. That is called immediate crisis, right? किसी का एक्सीडेंट हो गया, लात टूट गई है, that is not immediate crisis. बॉडी फ्रैक्चर बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दैट इज नॉट इमीडिएट क्राइसिस, राइट? सो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी होगा, दैट इज इमीडिएट क्राइसिस. सो फेजेस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, नंबर 1 इमीडिएट क्राइसिस, नंबर 2 इंटरवेंशन. इंटरवेंशन करना आपने, 2 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग लड़ रहे हैं, क्राइसिस है वहां के अंदर, राइट? एक दूसरे को मार रहे हैं, आपने इंटरवीन करना है वहां पे. दैट इज नॉट इमीडिएट, दैट इज इंटरवीन करना.
जाके। और इंटरवेंशन और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, आप उनकी लड़ाई छुटा के घर आ जाएंगे, वही नहीं बैठ उनको समझाने लगेंगे आप। दैट इज a psychological first aid, that is the intervention only, right? And then second phase immediate relief दे दिया आपने, सेकंड फेज फिर आएगा इमीडिएट रिलीफ के बाद उसको कितना आराम हुआ और उसके बाद फर्दर कहाँ लेके जाना उसको, दैट इज सेकंड फेज। दैट मीन्स कुछ क्राइसिस को आपने स्टेबलाइज कर दिया है। स्टेबलाइज करने के बाद क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टेबलाइज हो गया इंडिविजुअल वहां पे, अब उसको कहाँ लेके जाना है। लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ कोरोना। कोरोना में फार्मर्स को स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, लेबर क्लास को स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। क्राइसिस में तो सब कुछ गुम कर चुके हैं ना अपना, अब उनको रीबिल्ड करने के लिए सेकंड स्टेज आ गया उनकी पैकेज देने के लिए, टू रीबिल्ड देम, टू रिहेबिलिटेट देम। देन द थर्ड फेज, फाइनली फिर हमने उनको रिहेबिलिटेट पैकेज दे दिया। पैकेज के बाद उनको चेक करना है कि वास्तव में वो लोग रिहेबिलिटेट हो गए या नहीं हो गए, या उनको पैकेज का ठीक यूज किया या नहीं किया। द नेक्स्ट steps in crisis intervention, what are the steps we have to take as a counselor, and these are the given by Aguilera. Aguilera is a person in 1982, AGUILERA 1982 have given 4 steps. Number 1, assessment. Number 2, planning. Number 3, implementation. Number 4, resolution. Right? I'm not going in detail about all these 4. These are very easy. You understand? Repeating. Number 1, assessment. Number 2, planning. Number 3, implementation. And number 4, resolution. Resolve karna. Then assessment. How you go for assessment? Right? The assessment process attempt to answer questions. Number 1, what has happened? Kya ho gaya hai? That means you have to identify the problem. Only then you can assess the crisis level. Until you cannot understand what happened, you cannot identify the problem, you cannot assess the crisis. Then who is involved? लड़का इन्वॉल्व है, बुजुर्ग इन्वॉल्व है, लड़की इन्वॉल्व है, मेरा कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व है? पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इंडियन इन्वॉल्व है, कौन है? बिकॉज दैट इज मोर कंसर्न। आपका अपना को नियर डियर होगा तो यू विल बी मोर सपोर्टिव, राइट? यू टेक द एग्जांपल ऑफ elderly people, somebody is abusing to elderly, lot of people can rush up there to help elderly people, right? और कोई यंग पर लड़ाई कर रहे हैं, आधे लोग तो छोड़ देंगे, छोड़ो यार जवान खून लड़ने दो, हमने क्या करना, हमारी लड़ाई थोड़ी है, राइट? वो इज इन्वॉल्व देयर। देन व्हाट इज द कॉज, उसका कारण क्या है, आपने पहले चेक करना है। बिना कारण किए, बिना चेक किए, पहले बिना असेस किए, बिना पता किए कि कौन इन्वॉल्व है और बिना कारण पता किए बीच में इंटरवेंशन नहीं देंगे, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम? कॉज का पता चल गया, व्हाट इज द कॉजेलिटीज, cause of onset of the problem, crisis, but how serious is the problem, kitna serious problem hai, right? So only then you can go for crisis intervention or counseling. Crisis worker determines the following during the assessment process. Number 1, onset of the crisis. जो क्राइसिस हुआ उसका ऑनसेट, शुरुआत कैसे हुई, ये भी हमने चेक करना पड़ेगा असेसमेंट करने के लिए। जो क्राइसिस है, हाउ दैट क्राइसिस हैज बीन स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ है, राइट? आप फॉर एग्जांपल कोरोना के चाइना ने शुरू किया, हमें पता ही नहीं है, बट हम तो अफेक्टेड है ना उससे, राइट? तो वी शुड नो ऑनसेट ऑफ द क्राइसिस, किसने क्राइसिस शुरू किया है। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रिसिपिटेटिंग मींस जो इसको उत्पन्न करने वाले कारण, that means who, what, when and where of the, who is responsible, what is the problem, when it is happened and where it is happened. Who, what, when and where. Who is it, what is the problem, when happened and where happened. More important element of your crisis counseling. Planning, therapeutic intervention.
You have to plan. The person should be involved in the choice of alternative coping methods. आप जो भी इंटरवेंशन देना चाहेंगे इंटरवेंशन प्लान कर लें कि जो अल्टरनेट अवेलेबल जो उनमें से कौन सा अल्टरनेट लगता है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के, उसी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के साथ आप जाएंगे, अपनी तरफ से इंपोज नहीं करेंगे. The need and reaction significant other must be considered. Need and reaction is to be noted down. क्या उसको पर्टिकुलर इस काउंसलिंग क्राइसिस की जरूरत है या नहीं है? क्राइसिस काउंसलिंग शुरू किया उसके बाद रिएक्शन क्या आ रहा है, you have to check and only then you can go for therapeutic interventions for crisis counseling. Crisis counseling or therapeutic intervention depends on pre-listing skills, the creativity and flexibility of the crisis, what and rapidity of the person response. Pre-listing skills है आपकी, because you are expert. आपने इंटरवेंशन करना है, आपका कुछ टेक्निक, कुछ स्किल, कुछ पहले आपके माइंड में लिस्ट, राइट, फिर आप आगे चलेंगे. The crisis worker have the persons to establish the intellectual understanding of the crisis. Crisis worker के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपने, प्रॉब्लम तो वो क्राइसिस से बाहर आ जाएगी. मरे इज ए नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, MURRAY मरे, MURRAY मरे 1979. Therapeutic technique for the proposed therapeutic technique for crisis intervention, display acceptance and concern, attempt to establish a positive relationship. पहले आप display, you must to signify, test the acceptance and concern and attempt to establish a positive relationship. जो क्राइसिस से अफेक्टेड है उसके साथ आपने आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उससे कंसर्न रखेंगे और आप एक ऐसा अटेम्प्ट लेंगे ताकि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो आपके साथ जो आपके क्राइसिस में अफेक्टेड है. ये थेरेप्यूटिक टेक्निक बता रहा है मरे, राइट, 1979 थेरेप्यूटिक टेक्निक गिवन बाय मरे 1979 ऑफ क्राइसिस सिचुएशंस. थेरेप्यूटिक टेक्निक नंबर 1, display acceptance. You have to accept it and show your concerns to the client and you will attempt to establish a positive relationship. Second, encourage the person to discuss present feeling. Earthquake कल आया था, right? Yesterday we had earthquake. आज उसका feeling कैसा है? You have to discuss present one. Because पुराने वाले ही feeling ने आज की feeling generate करी है, right? Such as denial, guilt, grief or anger. प्रेजेंट फीलिंग इन टर्म्स ऑफ डिनायल, क्या वो क्राइसिस इंटरवेंशन लेने को तैयार है या रिफ्यूज कर रहा, डिनाई कर रहा है? क्या उसके मन में गिल्ट तो नहीं है कि किसी से हेल्प लेके बाहर जिंदा निकल के आ रहा हूं? गिल्ट तो नहीं आ जाएगी? या उसके अंदर कोई अपने आप में दुख तो नहीं होगा इस चीज का कि मैंने किसी से अपने आप की हेल्प नहीं कर पाया? और या फिर उसमें गुस्सा तो नहीं आएगा कि तू मेरी हेल्प करेगा, राइट? सो वी हैव टू एनकरेज द पर्सन टू डिस्कस पर्सनल फीलिंग कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस हेल्प के चक्कर में यू कैन नॉट डिनाई, यू शुड नॉट बी गिल्ट फीलिंग, यू मस्ट नॉट हैविंग एनी ग्रीफ एंड यू शुड नॉट हैव बी एंग्री एज वी आर हेल्पिंग यू. हेल्प द पर्सन टू कन्फ्रंट द रियलिटी ऑफ द क्राइसिस. उसको एनकरेज करना है, सपोर्ट करना है टू फेस द रियलिटी ऑफ द क्राइसिस, राइट? देन एक्सप्लेन that person's emotions are normal reaction. Crisis automatically we are to emotionally react. छोटा कुत्ता देखे भी कहेंगे होए कुत्ता, और बहुत कुत्ता देखे तो भी कहेंगे कुत्ता खड़ा हुआ, right? We are, a small dog is there, then we are, a big dog is there, we have to react to the emotional reaction that they fear from the dog, right? So explain the person's emotions are a normal reaction to the crisis. उसको समझाओ कि क्राइसिस में रिएक्शन करना सबका एक नॉर्मल रिएक्शन है हमारा,
Everybody will react in crisis. Avoid giving false reassurance. झूठा विश्वास मत देना क्लाइंट, झूठा विश्वास नहीं देना क्लाइंट को कि हम आपको ये करेंगे ये करेंगे. डोंट गिव एनी फॉल्स assurance. Clarify fantasies and contrasting them with fact. जो भी fantasies मन में चल रही क्लाइंट को उसको क्लियर करो. No fantasy should be there because ask the client to live in reality. No fantasies. Set limit on destructive behavior. Destructive behavior है उसकी एक लिमिट फिक्स करो. इतना नुकसान होगा कोई बात नहीं है, जिंदगी जिंदा रहेंगे तो फिर कमा लेंगे, राइट. इट डज नॉट मीन कि डैमेज को लेके बैठा रहेगा दिन रात रोता रहेगा. एम्फसाइज द पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर बिहेवियर एंड डिसीजंस. हमने उसको रिस्पांसिबल ठहराना है क्लाइंट को. यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर बिहेवियर एंड फॉर डिसीजन. जो भी डिसीजन लेंगे यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट. Assist the person in seeking help with everyday activities of daily living until resolved. जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता उसको हमने सिखाना है कि एवरीडे एक्टिविटीज को रिजोल्व करने के लिए assist the person to seek the help. ये नहीं को शर्मिंदा करेगा या हेजिटेट करेगा कि मैंने किसी की हेल्प नहीं लेना. टू असिस्ट हिम टू सीक द हेल्प टू फेस द डेली प्रॉब्लम. Nursing interventions to evaluate. Then now this is about your crisis intervention, and now I am moving to your next module, social skill therapy. Social skill therapy is the next modality of counseling and family therapy. Social skill therapy, that means socially we are to be skillful. If I am a social, so lot of problem I am ready to face. If I am antisocial, no social factor, no society will be with me. I am alone to face any crisis, any problem. Social skill, that means social. That is, so automatically social skills we don't have time. और साइको एजुकेशन भी करना था हमने, तो टाइम ऑलमोस्ट हो गया हमारा, तो हम क्या करें. हेलो सर, ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो गया. विद्यार्थीगण अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न रख सकती हैं. अगर आप अपना प्रश्न नहीं रखेंगे तो. Sir, I have a query to ask our teacher, our professor. May I ask? Yes, please. Hello. Yes, sir. Yes, please Myself, ask. Lakshmi. Sir, I have a query regarding our practical. Actually, 15 June is the last date. But if somebody is unable to complete within 15 June, then what will be done? तेजपाल जी, दिस इज रिलेटेड टू, आप जवाब दो. प्रैक्टिकल कैसे 16 जून तक नहीं कर पाए तो कैसे क्या करेंगे? नहीं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 16 जून तक ही करने हैं. वो तो सेशन का होता है. अगर आगे पीछे डेट भी है तो हम एक इस तरह में काउंट करते हैं उसको. उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 15 जून तक ही करने या 16 जून तक ही करने. Thanks a lot, sir. Thanks. Many thanks. Thanks. And sir, I have one more. Here is a few things are there. During COVID period, we are unable to visit mental hospitals or anywhere for our MCFT 2. I mean paper 2 practicals. So in such a cases, we are not able to write that we are visiting mental hospitals and all to attend the respondent interview. So in such a cases, we cannot add CDs or recording in our practical file. We are only able to contact with telephone interview. Am I right? You just record the telephone conversation only.
So I did not record the telephone conversation. Then there are so many students, they also did not record telephone So conversation. anyone will not without any proof of recording. Yes, sir. And Please pardon. you can submit without proof of recording. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you. Hello, एनीवन? Lily here. जी बोलिए. Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून. I had a question today's subject. Huh? I had a question regarding today's subject, sir. लिली, हाँ जी. आपकी आवाज में कुछ हमिंग है, थोड़ा सा. Sir, आपके मेरी पास भी सेकंड मोबाइल है, इस करके प्रॉब्लम. अच्छा सर. ये आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं चैट बॉक्स में. हाँ सर, मैं मैसेज पोस्ट कर देती हूँ सर. ओके. एनीवन? हेलो सर. हेलो. हेलो. यस यस यस. हेलो. कोई कुछ पूछना चाहेगा? फिर डॉक्टर साहब लीव करेंगे क्लास को. Sir, can you hear me now? हाँ लिली, आप लिख लीजिए, उसके बाद ही डॉक्टर साहब करेंगे. पहले आप लिख लीजिए. डॉक्टर साहब लिली, थैंक यू. डॉक्टर साहब लिली एक पर्सन डाल रही है चैट बॉक्स में. अगर संभव हो तो इसका सर दें. नहीं सर, आपकी ऑडियो प्रॉब्लम है. लिली जी, आर यू ऑडिबल? Yes, sir. Yes, hear you. नो, योर ऑडिबल प्रॉब्लम है. भी मैं बता रहा हूँ आपको. नो, सर, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है. डॉक्टर साहब हेलो. आप लिख सकते हैं. आप इन्होंने पर्सन डाल दिया है अपना. हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ. सपोज कोई ड्रग एडिक्ट है, वो रजिस्ट कर रहा है काउंसलिंग में. रेजिस्टेंस ब्रेक कर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना, एंड द रेजिस्टेंस इज टू बी ब्रेक थ्रू रेफॉर्मेशन. डॉक्टर साहब आपकी भी आवाज कट रही है. डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक बार. whosoever is breaking the resistance, whosoever is maintaining the resistance, so you have to resolve this resistance through your rapport formation. Rapport formation is not adequate, only the client is resisting there. If you have an adequate rapport formation, the client will not resist there. You have to break the resistance through your rapport building. Am I right? Hello. यस सर, बोल दिया उन्होंने. ओके सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके सर. नमस्कार. नमस्कार. कल सर, अच्छा इसके बाद हम टेलीफोन पे बात करता हूँ आपसे. जी जी जी. ओके.